अस्सलाम वालेकुम उर्दू बिटकॉइन चैनल में खुश आमदीद आप लोगों का वेलकम टू Urdu Bitcoin live stream. This stream I'm going to do both in Urdu and English. First we'll do in English and then later on we'll switch it to Urdu. We are going to see what's going on in the markets and especially the possible correction that is coming up and why I'm looking at that correction, that prices might go down a little bit before it goes up parabolic. So stay with me for that analysis, and then we are going to see another coin that is pumping really hard right now and why it is doing that, which is Audius, and what it is basically. So we'll look into that. So मेरे उर्दू बिटकॉइन चैनल के देखने वालों, पहले हम इंग्लिश में बात करेंगे मार्केट की सिचुएशन पे जो करेक्शन आने वाली है, मोस्ट लाइकली पॉसिबल करेक्शन नीचे की तरफ आने वाली है ऑलमोस्ट 10% और फिर उसके ऊपर जा सकती है एकदम से पैराबोलिक। क्यों ऐसा है वो देखेंगे, और आज एक नया कॉइन जो है वो डिस्कस करेंगे ऑडियस, उसके बारे में कि वो क्या है और वो क्यों इस वक्त बहुत तेज़ी से पम्प कर रहा है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं स्ट्रीम अपनी। Okay, so first of all, let's look at the market. This is the Bitcoin chart, and we can see that the Bitcoin chart just printed a red signal here just a few minutes ago. Last night when I talked to you guys, and there was a red signal, and we were here at the down, and we were waiting for a green signal, and I was anticipating that green signal to come up anytime last night, and it came. Actually, it printed right there. But right after that, just after one candle of 4 hour duration, we got another red signal, and this could well play right here in next few hours to go down, and then you can see at the bottom the market manipulation is happening, and bears are winning. Although the fear and greed index is still showing that market is confident and people are trying to invest, and still the money flow is in green. So what happened? Why we are seeing this momentum? Because a lot of technical analyst actually looking at the RSI chart, RSI lines, and it is clearly showing at 4 hour chart, even at the daily chart, it's clearly showing a downturn. And whenever that happens, the price dips. Price dips tremendously. If you can see that here, the price dips tremendously. Whenever you can see here, whenever it goes down, the price dips tremendously. So that's what here is a sharp. You can see the sharp down, and the price goes definitely in the downturn. That's what a lot of technical analysts suggesting, that right now it is possible that we can go down and touch $42,000 or $43,000 levels. We are right now at 46,000, just below 46,000 level. So if that happens, that's what I'm suggesting, that we might see a $3,000 or $4,000 correction here if we go down that way. So that 10% correction on the cards right now. If you are in the profits, save some profits, make some wise decision depending on your situation, what you are trying to do. I'm obviously not a financial advisor, so that is what happening. And same thing happening in Ethereum, that the last 4 hour chart candle is red, but it's still there is no red signal flashes here. But if you look at the RSI at the bottom, it is showing towards the downtrend. So we might see another red signal flashing very soon here as well. So if that happens, definitely the markets will slide down a little bit, and Ethereum again might go down $200 to $300 from here in $2,900 range.
it is going to be, maybe if it happens, if this plays out well, as it's look like, it is going to be a very quick correction and then bounce back very hard very quickly, and you'll see that even we can see like upper 50 or mid $50,000 for the Bitcoin, if it bounce back like this, because whenever this big correction happens, it bounce back really hard, it bounce back very fast. So this is what is anticipated anytime, maybe today, this week. It can happen anytime, maybe any news flashes, who knows, something might push that move. First maybe a little bit downward, that's we are in the downward trend, and then a very fast and very quick recovery towards above $50,000 for Bitcoin, and above $3,700 for Ethereum. That's my prediction for now. That's everybody's predicting. Everybody who understand these indicators, these technical analysis, these charts, they are suggesting, everybody's suggesting that we are in a big correction right now, and then we'll bounce back very hard very quick. So that's my take on it. So in Urdu, हम इस वक्त बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड्स हैं उसमें अगर उनको देखें, बिटकॉइन के और इथेरियम के सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। बिटकॉइन ने तो फ्लैश किया हुआ है इस वक्त रेड सिग्नल यहाँ पर, इथेरियम में अभी नहीं आया है, और इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि कल जब हम बात कर रहे थे तो ये रेड सिग्नल था और हम काफ़ी नीचे आ गए थे, और हम वेट कर रहे थे किसी भी ग्रीन सिग्नल आ सकता है, जो कि आया भी, प्रिंट भी हुआ है यहाँ पर बहुत इथेरियम और बिटकॉइन के चार्ट्स पे। लेकिन फ़ौरन ही अब पिछले 2-3 घंटे में ये रेड सिग्नल आ गया है बिटकॉइन पे तो, और मेरे अंदाज़ा है किसी को भी इथेरियम पे भी आ जाएगा, और ये अगर प्ले आउट करता है तो हम यहाँ से हम 10% करेक्शन देख रहे हैं दोनों में, कि नीचे 10% गिर सकते हैं दोनों, और ये एक क्विक करेक्शन हो सकती है क्योंकि सिर्फ एक RSI चार्ट है यहाँ पर नीचे आप बॉटम में देखें, जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड इस वक्त दिखा रहा है, और इसने जब भी पीछे अगर हम हिस्ट्री में देखें, जब भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया तो मार्केट के प्राइसेस में नीचे ही कमी वाक़ई हुई है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। हालांकि बाकी जितने इंडिकेटर्स हैं, फियर एंड ग्रीड के और मनी फ्लो के, सारे जो हैं पॉजिटिव हैं, तो उससे ये पता चलता है कि अगर ये प्ले आउट किया भी इसने RSI ने और नीचे की तरफ आया, तो बहुत जल्दी फिर ऊपर की तरफ भी बाउंस बैक करेगा ये। दोनों के लिए ये है, बिटकॉइन इथेरियम के लिए। सोलाना स्टिल जो है $69 पे होल्ड किया हुआ है अपने आप को, ऑलमोस्ट $70 पे। अगेन सोलाना भी जो है वो एक काफ़ी आप यहाँ RSI में देखें ऊपर आ चुका है, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे की तरफ इसका ट्रेंड है, तो मोस्ट लाइकली ये भी एक बिग करेक्शन की तरफ जा सकता है सोलाना भी। तो अगर किसी ने गेंस बना ली हैं इसके अंदर सोलाना में भी, तो आई वुड सजेस्ट कि उनको सेव कर लें उन गेंस को इस वक्त। ये वो टाइम हो सकता है सेव करने का गेंस का। तो ये एक क्विक मार्केट अपडेट है इस वक्त की। और अब हम आ जाते हैं अपने जो आज के कॉइन है उसकी तरफ, और सबसे पहले मैं इंग्लिश में उसको रैप अप कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उर्दू में बात करूँगा उस कॉइन के बारे में आपसे। So my English listeners, English viewers, the coin we are talking about is Audius. Audius is a decentralized system for to replace, you can say, Spotify. Your music, for music lovers, for music industry, this is going to be a big blessing, and it's going to be a big project because it is on blockchain technology. And it offers so many things for the artist directly to connect with the listeners, the viewers directly, and all the new upcoming artists can benefit it a lot. This has been there for a while, this project. If we see, it was launched back in November 2020, so it has been there for a while, and it has seen ups and downs, a lot of ups and downs. Like $4, it was all-time high was like $4.27, and what you can see a huge pump from yesterday. What that pump caused, actually, that pump was because of the news that just came yesterday and broke that TikTok actually shook hand with Audius. So that is really a big thing. Big user is going to be a big user
interaction with for Audius. It's a good ploy for Audius to shake hands, something like TikTok, and TikTok users will be able to use Audius within TikTok. So that's a really good sign. Really pumped up the price almost twice high within a day. It was dealing yesterday $1 something, if I'm not wrong. If we see a weekly will show us where it was just yesterday. Yeah, so here you can see also that it was yesterday at $1.65. Within 24 hours, it touches $4.03, and it went back now. It retraced a little bit. So I would suggest, if you are in the market to buy this coin and you like the project for long term, it still is 80% up, and anything which is up like 30% or more, it's not wise to just go ahead and invest in it right away. If you're looking at a short-term gains, obviously it will correct itself like it is doing right now, and just take a good guess. And it has been in the $4 territory. If it goes down further, touches around $2, I would say, then I would be looking to get into this project again. But right now it's very high. The price is very high. I wouldn't suggest you guys to go ahead and invest it. But again, if you are interested in the project, if you like what you see and you are bullish on it, and you want to hold for a long time, then it's a good time. I mean, the project is doing great. It is going upward momentum, and it's getting all the love it should. That kind of project. So and you can imagine if something like Spotify, if it's competing that, then it can go a long way. Um, this is a good project, as I said, and it's pumped recently a lot. So you can wait if you like, if you want to buy it, but be cautious that the price is pumped really. I mean, it's still in correction, as I said, and but it still is 80% up. So that was my coin for today, for you guys to introduce this awesome project. If you want that to be your portfolio, in your portfolio, so it's a good project. So I would say just wait for a while and let's see if the overall Bitcoin and Ethereum is in correction. If they are going down, it probably Solana and these kind of projects who recently pumped will go down tremendously as well. So wait for it to invest in it. That's my take on it. Thank you very much for the English listeners. Now for the Urdu listeners, आप लोगों को इस कॉइन के बारे में बता दें कि ऑडियस जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग म्यूज़िक इंडस्ट्री में लाइव स्ट्रीमिंग का ये एक स्पॉटिफाई जो ऐप है उसका कंपटीटर है. ये डिसेंट्रलाइज वे में कर रहा है. बहुत ही बेनिफिशियल है जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए और लिसनर्स के लिए भी, कि नए म्यूज़िक को बहुत ही आसानी के साथ वो सुन सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं. और जबकि जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी ये फ्री है टू अपलोड कंटेंट्स. इसको आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है. और रिसेंटली इसका पम्प करने की वजह जो न्यूज़ में है, जो कि टिकटॉक के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है अभी, जिसकी वजह से बहुत आगे जा सकते हैं. बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप इनको मिल सकती है. बहुत ज़्यादा टिकटॉक के व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, बहुत स्टेबल जो है वो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक का. उनसे हाथ मिलाने का मतलब यही है कि ये बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ही ग्रो करेंगे बहुत स्पीड से. अभी नवंबर लास्ट ईयर में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट, लेकिन इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किया है. $4 अपने ऑल टाइम हाई जब पिछला गया है, ये जब मार्केट्स ऊपर गई हैं तो ये $4 और 27 सेंट तक गया. और ये वापस इस न्यूज़ के साथ वापस पम्प किया इसने ऑलमोस्ट $4 को. फिर इसने 24 आवर में आप देख रहे हैं $1.65 से $4.03 तक गया. अभी थोड़ी सी जो है वो मार्केट्स क्योंकि इस वक्त डाउन टर्न का शिकार हैं, तो इसने भी थोड़ी करेक्शन दिखाई है और नीचे आया है. तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा ये कि जो चीज़ अभी 80% पम्प की हुई है स्टिल अभी करेक्शन में भी,
तो उसको थोड़ा सा टाइम दिए, थोड़ा वेट कीजिए उस तक। बिटकॉइन इथेरियम अगर नीचे आ रहे हैं और वो करेक्शन में, तो ये भी नीचे आए, और ये या सोलाना जो भी अभी रिसेंटली पम्प किया उन्होंने, वो नीचे आएंगे प्रोजेक्ट्स फिर डेफिनेटली। वो जितनी तेज़ी से ऊपर गए उतनी तेज़ी से नीचे भी आएंगे, तो उसके लिए वेट करें, उसमें सही टाइम पे एंट्री करने का। और मेरा टारगेट जो है अपना पर्सनल, मैं ही देख रहा हूँ कि अगर ये वापस अगर $2 के करीब आता है, तो आई विल डेफिनेटली जो है जंप इन करूँगा इसके अंदर दोबारा से। तो ये सोलाना का भी यही मैं आपको बता दूं कि सोलाना भी जो है जो थोड़ा सा करेक्शन मोड में आ रहा है, और 72 डॉलर को क्रॉस करने के बाद जो है $74 एक्चुअली $74, और अगर हम उस या इसकी ये जो फाइनल $75, आई वाज राइट, या $75 को टच करके जो है ये ऑलमोस्ट जो है करेक्शन में आया है $69 पे इस वक्त, और चांसेस हैं कि ऑलमोस्ट ये $50 तक आ सकता है वापस नीचे। तो अगर आप अभी इसमें फोमो इन नहीं हुए हैं तो अभी वेट कर लीजिए। इस वक्त मार्केट्स जो है थोड़ा डाउन टर्न का शिकार हैं, तो हो सकता है कि 5-10% चीपर आपको कॉइन्स मिल जाएं जो भी आप लेना चाहते हैं, अगर आप 1-2 दिन वेट करें और मार्केट्स पर नज़र रखें। मार्केट्स ने अगर दोबारा से पलटा खाया और वापस ग्रीन डॉट्स आए और कुछ डिफरेंट हुआ, क्योंकि RSI सबके ही डाउन टर्न शो कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसके भी RSI और बिटकॉइन इथेरियम के भी RSI जो हैं वो इस वक्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है मैट्रिक्स, उसको वो देखते हैं सब, और ये सारे ही डाउन टर्न का शिकार हैं, बिटकॉइन में भी इथेरियम में भी। तो बहुत कॉशस के साथ, बहुत अपना जिसको कहते हैं कि प्रॉफिट्स को सेव करते हुए चलें, और इस वक्त नज़र रखे हुए मार्केट पे चलें कि क्या हो रहा है। मोस्ट लाइकली मार्केट्स जो हैं आज के दिन थोड़ी सी साइडवेज रहें, और नीचे की तरफ ज़्यादा चांसेस हैं, 10% नीचे करेक्शन का सबको लोग कह रहे हैं। तो उस पर नज़र रखें कि आपके ऐसा ना हो कि प्रॉफिट जो बनाए हैं आपने, गेंस जो आपने किए पिछले दिनों में, वो लॉस हो जाए आपके, तो उनको सेव करते हुए चलें। और ऐसा भी नहीं करें कि पूरे का पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल लें, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर मार्केट्स सबको दिखा के नीचे जा रही एकदम से ऊपर आ गई, तो आपको पूरा का पूरा लॉस ना हो जाए। तो कुछ थोड़ा बहुत सेव करके प्रॉफिट्स को निकाल के रखें, ताकि कैश इन हैंड हो आपके पास, अगर मार्केट डिप करती है तो आप चीपर कॉइन्स खरीद सकें। लेकिन सारी इन्वेस्टमेंट भी बाहर नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट्स, नो बड़ी नोस के मार्केट क्या करेंगी, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं, जो RSI इंडेक्सेस हैं, वो थोड़ा सा, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को चेंज लिया है। और आप देख सकते हैं कि अभी बात करते करते हम RSI इंडेक्स को नीचे की तरफ दिखा रहे थे, और अभी ये फ्लैट हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि फ़्लैट होने के बाद जो है वापस ऊपर चला जाएगा या वापस नीचे आएगा। इस वक्त बिल्कुल अनडिसाइसिव मोड में है RSI। अब अगर हम नोट करें, बिटकॉइन का देख रहे हैं, इथेरियम नहीं, ये इथेरियम का है, हम बिटकॉइन का भी चेक करते हैं क्या दिखा रहा है वो। ये देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम। इसने भी अभी इनडिसाइसिव मोड में आ गया, नीचे जाते जाते अब ये एकदम बिल्कुल इनडिसाइसिव मोड में आ गया है। यहाँ पर सीधा सीधा हो गया बिल्कुल एकदम से। और सोलाना क्या शो कर रहा है, सोलाना थोड़ा सा स्टीप में है अभी स्टिल, लेकिन बहुत डाउन टर्न नहीं है, स्टीप में है डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पम्प कर चुका है, तो चांसेस हैं कि ये अब गिरेगा। तो ये हो सकता है कि एक टाइमली मैनर की बात हो कि अभी रिसेंटली थोड़ा सा मार्केट्स थोड़ी सी ऊपर आई, लेकिन फिर नीचे जाने के चांसेस हैं इनके, और ये ऊपर नीचे हो रही हैं, तो साइडवेज मूवमेंट कहते हैं इसको। और मोस्ट लाइकली ये जो इंडिकेटर्स हैं जो शो कर रहे हैं, उसमें थोड़ा नीचे ही हो सकती हैं, तो ऊपर जाने से पहले डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म जो एनालिसिस हैं सब यही कह रहे हैं, बेनतहा पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म है, यानी कि 2 वीक्स 3 वीक्स और मंथ फ्रॉम नाउ, मार्केट डेफिनेटली ऊपर ही की तरफ ट्रेंड करेंगी। लेकिन ये क्विक करेक्शन की इस वक्त जो इंडिकेशन है, वार्निंग है, वो इस वक्त आ रही है कि क्विक करेक्शन थोड़ी सी हो सकती है, इससे पहले कि वो नेक्स्ट लेग अप हो पूरी मार्केट का। तो ये इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और इसको देखते रहिए इंडिकेटर्स को मुख्तलिफ, कि किस तरफ आपको इंडिकेट करेंगे। आपने देखा कि विद इन फ्यू मिनट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। और आप अगर डे ट्रेडिंग में, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में होल्डर्स हैं, हॉडलर्स हैं कॉइन्स के, तो कोई फिगर की बात ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जो डे ट्रेडर्स हैं, जो कि फ्यू आवर्स पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बेच के लो पे बेच के हाई पे सेल, हाई पे बेच के लो पे ख़रीदना चाहते हैं, इस तरीके से। तो उनके नहीं है ये इस वक्त कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए अपनी ट्रेडिंग्स के अंदर।
आज के लिए बस इतना ही। आपको मार्केट अपडेट्स दी और उसके बाद एक नए कॉइन्स के बारे में बताया आपको, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ऑडियस, और हम उसके ऊपर नज़र रखे रहेंगे, आगे भी देखते रहेंगे उसको किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और होपफुली आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। इस वीडियो से अगर बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपना ये वीडियो देख रहे हैं आप। अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको फैलाइए ताकि वो उर्दू में ख़ास तौर पे ये कंटेंट्स को जो है इनको रोज़ाना की बेस पे मिल सकें और वो भी फ़ायदा उठा सकें। लाइफ चेंजिंग गेम्स जो इस वक्त हो रहे हैं सबको, और जो कॉइन्स मैं आपको बताता रहता हूँ गाहे बगाहे, उससे उनको फ़ायदा होगा, उससे उनको बेनिफिट हो। तो हम सब मेरा तो यही मानना है कि हम सबको एक साथ ऊपर आना है, एक साथ उठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरह से कुछ लोगों को फ़ायदा हो और कुछ लोग गरीब हों उससे, और मज़ीद जैसे लॉटरी वगैरह में होता है कि गवर्नमेंट्स और बड़ी कंपनियां लॉटरी से पैसा कमाती हैं और बेचारे गरीब लोग होते हैं वो अपना पैसा उसमें गंवाते हैं, या कैसीनोज़ वगैरह में। तो वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज जो है उसका अपोजिट है और ये मूवमेंट। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं, ख़ासतौर पे वो लोग जो इंग्लिश कंटेंट्स की पहुँच नहीं है उन तक, वो नहीं समझ सकते हैं उनको, तो पीछे ना रह जाएं। ये मेरा मेरा मिशन ये है, मेरा मेरा तो आप इस मिशन में अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। जो पीछे मैंने वीडियोस बनाई हैं इतनी रोज़ाना, आप देखिए कि मैं रोज़ाना की बेस पे कई महीनों से वीडियोस रोज़ाना बना रहा हूँ और रोज़ाना आपको अपडेट्स दे रहा हूँ, नए नए कॉइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें। प्लस जो उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था कि वो क्या है, किस तरह से वो यूज़ हो सकती है आम ज़िंदगी में, उनके लिए मैंने एक ज़बरदस्त इंटरव्यू कंडक्ट किया सोहेल के साथ, और वो मैंने अपलोड किया येस्टरडे पूरा। उसको ज़रूर देखिए, उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ जिन जिन को ज़रूरत है समझने की बिटकॉइन और उसकी मूवमेंट को और ब्लॉकचेन की मूवमेंट को, कि वो किस तरीके से लाइफ चेंज कर सकती है पूरी दुनिया के, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका है उनकी। तो मेरी इस कोशिश में, मेरी इस काविश में प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। नेक्स्ट ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम तक के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। हो सकता है आज ही लेटर टुडे मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा फिर मार्केट्स अपडेट लेके कि मार्केट्स किस तरफ मूव कर रही हैं। खुदा हाफिज़।